करने के बाद दोबारा फिर हम लोग एक बार बिगनिंग से ओपनिंग कर लेंगे, सो दैट। ठीक है मैम, स्टार्ट कर दिया जी आप कर लो स्टार्ट कंटिन्यू 5 सेकंड्स 5 सेकंड्स 5 4 3 2 1 यस स्टार्ट। Namaskar, good morning to all. I welcome all the participants here. My name is Arvind Gupta and I am heading Diksha PMU here at CIT NCRT. I am also joined by Professor Indu Kumar. She is a national coordinator for Diksha. So ma'am, I welcome you here and over to you. If you could please start with your opening remarks. Yeah, thank you, Mr. Arvind. And I also welcome all the participants, different representatives from the district level and state level for joining this meeting. Welcome, everyone. As we know, we are working as per NEP 2020 and keeping in view National Policy of Education 2020, we have to reach out for everything, any change in the field of education to enhance the quality of education. And for that, we have to work at grassroots level also. Up till now, as far as Diksha is concerned in this endeavor, up till now, we were having different tenets on Diksha, and our states and union territories were tenets on Diksha, along with NCRT and some other national level organization. But now the vision is that we have to reach out at the district level also, so that diets can also be strengthened and they can also utilize Diksha in the way leveraging Diksha is on for enhancing the quality of concern in terms of sharing the concern, using sharing the content, using Diksha as a repository of content, also housing need-based courses also, because when we work at the national level, there are specific needs of different states, union territories, and districts. So like that, teachers also have different needs as far as their continuous professional development is concerned. And also we need to have a lot of content on Diksha in the local languages. And we also need to leverage Diksha for housing the textbooks in the regional languages, which is already there, but we need to have a lot of content in regional languages, which should be added to the QR codes also, and added for different purposes on Diksha. So these are a few deliverables that we have, and we also need support from states and diets, districts, and in turn, districts will also get strengthened when they will use Diksha with autonomy, with the way they want to use Diksha. But for that, we have a certain structure using which you can utilize the facilities which are on Diksha, and also that way you can fulfill the way you have envisaged the education system to work at the district level, and how different facilities which are developed at the national level can be utilized at the grassroots level. So with these words, I will hand over to Mr. Arvind, who will make a presentation to present in front of you in a more structured way how we will collaborate at state and the district level, and what all responsibilities each one of us will have to fulfill this objective. So thank you very much.
over to Mr. Arvind. Thank you, ma'am. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोगों की एक वर्कशॉप, we already had one workshop on 2nd of December, wherein we have got overwhelming response from all the districts, from all the states, from all the union territories, and many other participants. And this is a follow-up meeting after that, and this is also being live on YouTube, because I see participants have reached 500 participants are there with us. Thank you so much for that. And limit of this session is up to 500, and plus then we can always move on to YouTube, wherein we will also try and take up the questions in the end. I also see few hands which is being raised, so I would request we'll take and we'll have some time in the end to address those questions. So you may please raise your hands and also mark your attendance. Link is being shared in the chat box. For the same, if not shared, then I would request my colleague Vinita to share the attendance sheet link in the chat box, so wherein everyone can start marking their attendance at the same time. So in today's presentation, or in today's agenda, we would be covering the district empowerment approach, that how it should be. And we all know that diets and districts are very important body and very important player while designing the programs at the local level, because they are the one who are working on the ground, front ending, and they understand what is the need in terms of capacity building, in terms of learning material for students, and so on. So they are very important player for all of us. Having realized all those importance, even in order to attain the certain inspiring goal laid down by or laid under NEP 2020, our aim and our ambition is to go ahead and move ahead together along with the entire ecosystem partners, ecosystem players, wherein districts has a very important role and vital role to play. So we will be also covering in between Vidya Amrit Mahotsav, because the time has come when districts needs to evaluate those innovations which has been submitted, and the last date was already over by 10th of this month. So we'll cover that also in today's agenda. So with that, I would request, I have with me Rakesh Thakkar, who is leading state PMU. So he would be running with the presentation what we have and showing the approach and what all districts can do at their level. Because initially we have released the SOP, standard operating procedure, or the process, wherein it was shared how credentials and how access can be granted or can be given to the districts. So now, after having the access, and that's again the moment which we still need to achieve. We have got again a great response, wherein we have seen that more than 100 districts have been already given access. And we would like to continue with that approach. Thank you all to all the states and UTs in doing so and helping us with that. And also, what next? Now we have this access given to us. So having understood the real need on the ground, how the programs and the projects can be initiated, leveraging the Diksha infrastructure is something which I would request my colleague Rakesh to take it further. Thank you. Thanks, Arvind. Thanks, Dr. Indu. So, Arvind, I can continue English or Hindi? What do you suggest? I think let's use mix English and Hindi, so we can. It would be good for some important things can be highlighted quickly in English and Hindi. ठीक है, फेयर इनफ। तो सबको नमस्कार। तो जैसे डॉक्टर इंदु ने कहा कि आज का सेशन डिस्ट्रिक्ट को एम्पावर करने के अप्रोच के बारे में है, एंड एज राइटली टोल्ड बाय अरविंद आल्सो कि इसमें क्या कैपेबिलिटीज है और कैसे हम उस पे प्रोग्राम बिल्ड कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज एक जानकारी लेंगे। सो वेरी क्विकली आई टेक यू थ्रू द एंटायर प्रेजेंटेशन। सो ये क्विक एजेंडा है। विल गो टू द बैकग्राउंड ऑफ द
कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट अप्रोच, इस पे का क्या कम्युनिकेशन हो चुका है, दीक्षा में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या प्रोग्राम बन सकते हैं। एक प्रोग्राम का हम डिटेल में विस्तार में बात करेंगे कि हाउ इट कैन बी रोल्ड आउट एंड डिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेशन मॉडल क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या एक बार समझ लेना बहुत जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो व्हाट आर वी स्पीकिंग ऑफ। बेसिकली डायट्स को क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट पब्लिशिंग में फ्रीडम मिलना जरूरी है, एज डॉक्टर इंदु also rightly highlighted about autonomy to the districts, because that's the last entity in the entire hierarchy of education, more or less last. उनके नीचे of course बाकी entities है, but administratively the authority rests at the district office. So that is one. Second, also to get the freedom in designing and rolling out programs for their entire blocks. So program design करके roll out करने की autonomy कहिए, liberty कहिए या creativity कहिए, that is what the concept is. तो जैसे SCRT के नीचे डाइट्स काम करते हैं तो उनके नीचे अभी ये सारी यूजर्स या ये सारे राइट्स या ये सारे रोल्स अभी एक्टिवेट हो रहे हैं, कुछ केस में हो चुका है, कुछ में शुरुआत हुई है, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली इट इज the diet which works closely with the different clusters, schools to get the programs designed, implemented, supported. A concept की जरूरत क्यों पड़ी? So why this concept? Because districts have the potential to design programs at their own level. हर डिस्ट्रिक्ट का अपना कॉन्टेक्सचुअल रिक्वायरमेंट होता है, हो सकता है, एंड उसके हिसाब से उनको प्रोग्राम रोल आउट करने की अगर लिबर्टी मिलती है तो फायदा हो सकता है। मतलब यूनिफॉर्म अप्रोच नहीं रहेगा, बट एक्चुअली कस्टमाइज अप्रोच रहेगा। दूसरा, एट द मोमेंट डाइट्स की डिपेंडेंसी होती है एससीआरटी के ऊपर, बिकॉज यूजर आईडीज क्रिएशन हो, पब्लिशिंग हो, ट्रैकिंग हो, वो एससीआरटी के पास होती है। इसके लिए जब यूजर क्रिएशन हो जाएगा तो आपको लिबर्टी मिल जाएगी और डिपेंडेंस कम हो जाएगा। तो इसमें ये दिखाया गया कि ऑलरेडी डायट्स पहले से ही, मतलब आज से 2-3-4 साल पहले से ही कोर्स डेवलपमेंट कहिए, आउटरीच और कम्युनिकेशन कहिए, ट्रैकिंग कहिए, इसमें काम कर ही रहे वेरी क्लोजली विद योर स्टेट एससीआरटीज। बट दैट टाइम पूरा आई कैन से लीड कहिए या एक्सेस पूरा एससीआरटी के पास था, जो अभी डायट्स को भी मिल जाएगा। सो एनीवे, आप जो पहले ये काम सपोर्ट में करते थे, अभी आई एम जस्ट एक्टिवेटिंग द लेजर पॉइंटर, वही काम आप इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हो। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। इसका बेनिफिट्स क्या होगा? जैसे इट इज रिटन हियर कि इट विल फॉस्टर क्रिएटिविटी इन डिजाइनिंग नीड बेस्ड, स्पेशलाइज्ड एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिसोर्स ग्रुप्स ऑफ द स्टेट। सोचिए अगर हर राज्य के हर डाइट में 2-3-4 लोग स्पेशलाइज जब हो जाएंगे कि दीक्षा प्लेटफॉर्म क्या है, केपेबिलिटी क्या है, प्रोग्राम कैसे डिजाइन होते हैं, कैसे रन होते हैं, ट्रैक होते हैं, इंप्रूवमेंट्स कैसे होते हैं, प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, तो इमेजिन व्हाट विल बी द पावर or the strength the state SCRT will have to roll out any bigger program. So इसके लिए these resource groups can provide support to SCRT during larger program, right? And at the diet level, it is easy to reach out to blocks and clusters faster because आपके control में पूरा जिला होता है. So cluster, a block, cluster, and उसके नीचे schools. So these are the benefits of this concept. So very quickly to give the background, जैसे आपको सबको पता है ऑलरेडी, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एनसीईआरटी से जेडी सर के सिग्नेचर से ऑलरेडी लेटर हो चुका है 8 सितंबर को, और उस लेटर के साथ साथ एसओपी भी इशू हो चुकी थी जो आप लोगों ने यूज की। और वो एसओपी बेसिकली इट वाज मेंट फॉर एससीईआरटीज। अगर मैं एससीईआरटी हूं तो मुझे रोल्स क्रिएट करने, क्रिएटर, मेंटर, रिव्यूअर, तो मैं कैसे क्रिएट करूं, उसका प्रोसेस, कि मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आई शुड हैव वन टेक्निकल एडमिन, दीक्षा कोऑर्डिनेटर, हाँ, तो ये सब मुझे करना है। तो वो स्टेप्स, टेक्निकल ऑपरेशनल स्टेप्स का वो एसओपी था व्हिच वाज मेंट फॉर एससीईआरटीज, जो ऑलरेडी इशू हो चुका है, एंड उसके ऊपर ऑलरेडी आप लोगों ने आई कैन से एक्शन लिया। देयरफॉर वी हैव मोर देन 100 यूजर्स क्रिएटेड, एज अरविंद वाज राइटली सेइंग। तो दिस नेक्स्ट स्लाइड इज एग्जैक्टली हाइलाइटिंग दैट कि जो प्रोसेस है यूजर आईडी क्रिएशन का, ग्रीन टिक का मतलब है काफी स्टेट्स ने हो गया, मतलब कर चुके हैं। तो ये ऑलरेडी प्रोसेस आप लोगों ने फॉलो किया है। तो इसमें कौन से यूजर्स थे, वेरी क्विकली अगर इफ आई हैव टू शो यू, तो एज यू कैन सी हियर, कंटेंट क्रिएटर, रिव्यूअर और मेंटर, ये 3 यूजर। हाउएवर, आई एम जस्ट टेकिंग यू टू अनदर क्विक स्लाइड बिकॉज नाउ
already you know of Vidya Amrit Mahotsav, which is part of a bigger, I can say, approach called as micro improvement program, जिसको हम MIP कहते हैं, या तो improvement projects. तो उस capability को, उस program को run करने के लिए you need 3 more types of users, which is program designer. I'm highlighting the laser pointer. So, sorry, program designer, program manager, report viewer. So ये slide में ये दिखाने की कोशिश हुई है कि when you share your user creation template, you can actually align आपके creator, reviewer और mentor को ये additional 3 रोल align हो सकते हैं. आपने अगर यूजर क्रिएट किया उसी को हो सकते हैं, और अगर अभी आप यूजर क्रिएशन में जा रहे हो तो आपका रिक्वेस्ट इसी तरह से जा सकता है. सो दैट वाज अ क्विक इनपुट एट दिस जंक्चर. दूसरा, ऑलरेडी जो यूजर क्रिएट हो चुका है, आई एम श्योर उन्होंने मतलब एक ऑपरेशन स्टेप है कि आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ता है. अगर आपने किया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो अगेन क्विक इनपुट टू यू, आपको इस पेज पे जाना पड़ता है जो आप सबको पता है लॉगिन पेज है दीक्षा का. diksha.gov.in में जाके एक्सप्लोर में जाके टॉप राइट में लॉगिन का बटन दबा के आता है. तो उसमें फॉरगॉट पासवर्ड में जाके आपको आपने जो ईमेल आईडी क्रिएट किया था उस नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, जैसे महाराष्ट्र का एग्जांपल है तो diet maharashtra.satara.creator@gmail.com. सो वो आईडी और जो नाम दिया था mh_satara_creator वो डाल के नेक्स्ट करोगे तो आप इस ईमेल पे आपको ओटीपी जाता है. ओटीपी डालने के बाद आपको पासवर्ड चेंज का ऑप्शन मिलता है, फिर आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो. बिकॉज ये स्टेप करना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्विकली हाईलाइट कर रहा हूं. सो लेट्स गो बैक. तो ये था फर्स्ट स्टेप कि अपने को यूजर आईडी क्रिएशन करना है, राइट. काफी स्टेट्स ने किया है, तो ये उसका एक अपडेट का स्लाइड है. सो थैंक्स टू विनीता हु हैज कोलेक्टेड दिस एंटायर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो एज यू कैन सी, ग्रीन का मतलब है कि सारे डायट्स ने आईडीज क्रिएट किए हैं, यूजर आईडीज फॉर डिस्ट्रिक्ट्स, आई शुड से डायट्स. येलो का मतलब है कि सारे नहीं किए, बट लेट से मेरे पास 30 जिले तो मैंने 20 के करके रखे हैं, 15 के किए तो रेस्ट के करने हैं. और ब्लू का मतलब है कि शुरुआत करनी है. तो जो ब्लू वाले स्टेट्स है, अगर आपने शुरुआत की तो ठीक है, हम स्टेटस अपडेट कर देंगे, बट अगर नहीं किए तो रिक्वेस्टिंग यू टू टेक इट अप वेरी वेरी अर्जेंटली, बिकॉज हम इस पे फास्ट मूव कर रहे हैं. और दूसरा, उसी से रिलेटेड पिछले कॉल में भी 2 दिसंबर की कॉल में एक गूगल फॉर्म शेयर हुआ था, उसका ये लिंक मैं क्विकली यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसमें सबको रिक्वेस्ट की थी कि इफ यू कैन फिल दीज डिटेल्स, डायट का नाम, स्टेट का नाम, प्रिंसिपल का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और आपने ये क्रिएशन किया है कि नहीं, बिकॉज वी आर सेंट्रली कोलेक्टिंग दिस डेटा. So I think Vinita will again put this link in the chat so that you can re-access, add your details. Right? I'm going back to the slide. तो ये एक status है. So thanks to all these states which are in green and yellow. So that in fact Maharashtra भी green में somehow it is not in yellow. It is a mistake. So quite a few states. Thanks so much. तो अपने को remaining states को अपील है कि please immediately raise your request for user creation. Thanks. I'm moving ahead. तो taking that from there, जैसे आपको पता होगा पिछला जो कॉल था, as even Arvind was trying to relate or refer to that call, 2 दिसंबर को हमने कॉल किया था, जिसमें कैटेगोरिकली हमने 4 स्टेट्स और 4 SCRTs को स्लॉट दिया था, so that they can present their success stories, या I can say stepping stones in the direction of district empowerment approach. तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी ने प्रेजेंट किया था, खोर्दा डाइट मतलब ओडिशा से खोर्दा डाइट ने जो काम किया ओडिशा SCRT ने प्रेजेंट किया था, पंजाब SCRT ने प्रेजेंट किया था कि मानसा डाइट ने क्या किया था, एंड मेघालय से नॉनस्टॉन डाइट ने क्या किया था, दैट वाज प्रेजेंटेड. सो इट वाज अराउंड डिफरेंट नीड्स लाइक ईदर वीक लर्निंग आउटकम्स, राइट, सप्लीमेंटल लर्निंग, या तो गिविंग some package for FLN teachers, right, to access and then to implement that in classroom. जैसे अलग-अलग थे. Socio emotional learning पे पंजाब ने किया था. So again, these were very nice stepping stones, best practices. So that was showcased in the 2 December call, right?
अभी आफ्टर दैट नाउ वी आर मूविंग अहेड, वी हैव ऑलरेडी मूव्ड अहेड. तो ऑलरेडी ये SOP, as you are already aware, has been created and shared with everyone. So there was a letter issued 3 days back in which there were 3 links. पहला लिंक इस SOP का था. If you have to quickly click on the link, then this is what how the SOP you will get access to. तो 25 पन्ने का SOP है जिसमें सब कुछ है. प्रोग्राम का अप्रोच क्या है, प्लानिंग के प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की 4 फेजेस है, लॉन्च, प्री लॉन्च, पोस्ट लॉन्च, ये सारी चीज. यू विल गेट ऑल द डिटेल्स इन दिस. 25 पन्ने का SOP है, सो यू कैन गो थ्रू इट. ये ऑलरेडी इशू हो चुका है एज आई सेड एज पार्ट ऑफ द लेटर. एंड उसमें दूसरा लिंक है विच इज गिविंग यू एक्सेस टू वन गूगल फोल्डर जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसका नाम दिया है डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट पैक, जिसमें आपको, जैसे हमने कहा पहला लेटर इशू था 8 सितंबर को, जिसमें हमने पहली SOP इशू की थी SCRT को, उसका भी डंप है. उसके बाद 2 सितंबर को जो प्रेजेंटेशन दिया उसका पूरा PPT है. उड़ीसा ने एक लेटर इशू किया था SCRT से सारे डायट्स को, सारे DO ऑफिसर्स को, उसका एक सैंपल लेटर है, बिकॉज इट वाज अगेन अ नाइस प्रैक्टिस. यूजर एक्सेस के लिए एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है, उसका लिंक है. एंड दिस लेटेस्ट लेटर जो इशू हुआ फ्रॉम NCERT JD's डेस्क, वो है इंक्लूडिंग दिस SOP. तो ये गूगल ड्राइव का लिंक उसमें दिया. अपार्ट फ्रॉम दैट द थर्ड लिंक इज अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का गूगल फॉर्म. राइट, सो आई एम मूविंग अहेड. So now what are the immediate next steps associated with this is, as you can see there, आपको ये 3 रोल क्रिएट करने हैं. आई एम एक्टिवेटिंग माय लेजर पॉइंटर. सो ये 3 रोल एक्टिवेट करके लेने, अगर नहीं किए हैं, अगर किए तो कोई बात नहीं है. एंड एज आई सेड, जिन्होंने यूजर क्रिएशन शुरुआत ही नहीं किया, वो एक साथ 6 यूजर क्रिएशन का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जो मैंने कुछ देर पहले एक्सेल पे टेम्पलेट दिखाई थी. क्रिएटर, रिव्यूअर, मेंटर के साथ साथ प्रोग्राम डिजाइनर, प्रोग्राम मैनेजर, रिपोर्ट व्यूअर, तो 6 रोल. तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? गेट दिस 3 रोल्स एडेड, राइट, फॉर ईच ऑफ योर डायट्स. दूसरा, टू स्टार्ट विद प्रोग्राम प्रिपरेशन. तो अगली स्लाइड्स में हम वही देखने वाले कि प्रोग्राम जो मुझे एज अ डाइट जो रोल आउट करना है मेरे जिले में, वो कैसा करूंगा, उसका एक हम डिटेल्स देखेंगे. और उसके बाद प्रोग्राम प्लान लॉन्च्ड to be launched in 4th week of Jan. So that is what is the next step, so that you are equipped to launch the program in the last week of Jan. So very quickly moving to what are the possibilities on Diksha at the moment. As you must be already aware, आप Diksha को काफी महीनों से, सालों से एक्सेस कर रहे हो. तो very quickly the possibilities are, as you all are must be aware, creation of courses is a possibility. Creation of practice resources is of course something that can be done. Creation of assessments, certainly yes. Creation of projects, improvement project, जिसका मतलब जिसको हम कहते हैं MIP या माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, जिसका एग्जाम्पल है विद्यामृत महोत्सव. दैट इज अ पॉसिबिलिटी. एंड ऑफ कोर्स सर्वेज एंड ऑब्जर्वेशंस का भी कैपेबिलिटी प्लेटफॉर्म पर है. तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, ओके, ऑन दीक्षा. बट ये पॉसिबिलिटीज, how can that be converted into a program, and within that how I can go ahead. So next slide, we have highlighted what can be the programs that can be built using these possibilities or capabilities. So as you can see, we have actually bifurcated this into what can be program for students, for teachers, for administrators, for parents. तो student के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक diet हूँ, right? तो I can have a micro learning package MLP on hard spots. माइक्रो लर्निंग पैकेज ऑन सम वीक लर्निंग आउटकम्स, जिसपे मुझे स्टूडेंट्स को रेमिडिएट करना है या तो सप्लीमेंटल लर्निंग देना है. दूसरा, चैप्टर बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट में दे सकता हूँ मेरे बच्चों के लिए, सो दैट दे कैन क्विकली एक्सेस 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट, एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट और रॉन्ग आंसर, एंड दे गेट टू नो. इट्स लाइक अ डिपस्टिक फॉर मी एज अ स्टूडेंट. रिविजन पैक बना सकते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम्स आ रही है, final exams are अलग-अलग, secondary, higher secondary, board exams. There can be some package designed for students for that. And example, even for ECC grade, you know, small children of age, I can say 3 to 7 or 8, there can be nice audio, visual, video based, some home learning package which they can access from home. जैसे महाराष्ट्र में एक ये अच्छा प्रोग्राम हुआ था on the lines of Vidya Pravesh.
So parents were given some 12, I can say, QR code based Diksha links and 12 videos for the parents to run for their kids, for ECC grade students. So then for teachers, what can be done? Continuous professional development, which is CPD, teachers professional development, again teacher courses, या तो एलो बेस्ड या टॉपिक बेस्ड MLP. So ये MLP है बच्चों के लिए, ये MLP टीचर्स के लिए, right? So micro learning package meaning छोटे packages for teachers, for them to get remediated or upskilled on certain areas which have been traditionally hard spots or which have been weak LOs as per maybe NAS report, and it is more or less weak for entire district or state, and much lesser performance wherein even teachers may need some input on how to deliver that effectively. Last is FLN pack, जो टिक टैक लर्न की वीडियोस है ऑलरेडी रेडीली अवेलेबल है दीक्षा में. दोस कैन बी यूज्ड टू हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड कि क्या वीडियोस है, उससे TLM क्या बन सकता है. बाय द वे इसी के ऊपर खोरदा डाइट ने जो MLP लॉन्च किया, इंडिया में फर्स्ट डाइट टू लॉन्च MLP फॉर टीचर्स, ये वही पैक यूज किया था. एंड ये MLP फॉर स्टूडेंट्स जो रत्नागिरी ने लॉन्च किया, दैट वाज अगेन द फर्स्ट. सो मूविंग टू प्रोग्राम फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्या हो सकते हैं. Abhi, I'm an administrator, I'm a BO, I'm CRC, I'm some person handling administrative responsibility. There can be courses in respect of my roles and responsibilities and respect of what can be the areas of accreditation in my block, something to do with the different grading indexes, something to do with school governance. जो भी काफी सारे बहुत बड़ा रोल होता है एडमिनिस्ट्रेटर्स का, उनके लिए भी कोर्स बन सकते हैं, right? Even they were also let's say helping in micro improvements. Last, even for parents, there can be some small programs done for parents, something, maybe some package on child psychology, how to do home revision, how to do child care, and multiple ways. So ये सारे प्रोग्राम दीक्षा पर बिल्ड हो सकते हैं. ये स्लाइड उसी के लिए. नाउ नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उसमें कौन से वो सिलेक्टेड प्रोग्राम है जो आप एज अ डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि आप इस पे नए आ रहे हो, नए कैपेबिलिटी आपके लिए, व्हाट कैन यू डू. सो अ स्मॉलर वर्जन ऑफ दैट, एंड विद इन दैट लेट अस सी व्हिच कैन बी द वंस व्हिच कैन बी एफर्टलेस. So this is a small menu card of programs diets can plan. That is this what we are trying to highlight. तो स्टूडेंट फेसिंग क्या हो सकता है, टीचर फेसिंग क्या हो सकता है. इसमें 4 दिखाए गए, इसमें 3 दिखाए गए. तो उसमें पहला MLP ही दिखाया गया. So MLP is like micro packages, let us say for remediation of weak LOs for students. Now this is exactly that approach जिसके ऊपर मेघालय और महाराष्ट्र ने जो पहला I can say district level initiative launch किया, वो इसी I can say need के ऊपर था. ठीक है. So this can be one, right, जिसका हम विस्तार में आगे देखेंगे. So this can be one area of student facing program. Second can be chapter wise practice session जो हमने बात की, that's a possibility or capability on Diksha. Revision preparation कर सकते हो. Fourth is even now vocational education, which is gaining importance especially for the secondary grades. उसमें also if you have any I can say program in mind, any specific content that can be delivered on Diksha for as a supplemental learning for students, then certainly it can be, right, that can be planned. Secondly, on teacher facing, again MLP for teachers can be done, जो खोरदा ने किया using FLN pack, which is tic tac learn videos. Again effortless है, इसमें creation का कोई part नहीं है. Even just to explain on this, there is no effort for the moment, no creation to be done, because you use the existing textbooks of your state and chapters within that, so no creation effort. So coming to second of teacher facing, micro improvement program हो सकता है. तो उसमें एग्जांपल क्या दिखा है कि जब मैं एक दूसरी का टीचर हूँ, मैंने कोर्स कंप्लीट किया जिसमें मुझे सब वीडियोस पता चल गए, व्हाट आई कैन यूज इन द क्लासरूम फॉर माय स्टूडेंट्स. अभी मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ मेरे क्लास के अंदर एज अ टीचर, एंड उस इम्प्लीमेंटेशन का माय सुपरवाइजर या माय प्रिंसिपल इज टेकिंग वीडियो फुटेज एंड क्रिएटिंग दैट एज एन एविडेंस. और जब उस पे इम्प्रूवमेंट दिखता है तो दैट इटसेल्फ बिकम्स अ माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, स्मॉल MIP. दैट इज द एसेंस ऑफ MIP एक्चुअली. छोटी छोटी चीजें हम जब स्कूल लेवल पे करेंगे, उसका इम्पैक्ट पूरे स्टेट के एजुकेशन इकोसिस्टम के इम्प्रूवमेंट में आता है. और लास्ट है शॉर्ट कोर्सेस ऑन वीक लर्निंग आउटकम्स और हार्ड स्पॉट्स, अगेन फॉर टीचर्स. उसमें देयर इज वन एग्जांपल हियर, सो आई एम जस्ट क्विकली टेकिंग टू वन स्लाइड जिसमें there is this link given. You all can try to attempt this. It is a 20-minute flat 20 minutes का course है.
हिंदी में है, उसमें 5 मॉड्यूल्स है। टॉपिक है परिमापक क्षेत्रफल, पेरिमीटर एरिया, मेंट फॉर 6th ग्रेड मैथमेटिक्स टीचर्स। आई एम रिपीटिंग, ये टीचर के लिए कोर्स है। So at I am as a teacher, I'll get to know how to effectively deliver this concept inside the classroom, what activities to show, what TLM I need, how do I ensure that I understand the misconceptions, I know how to check the learning outcome in students, pointed enough, powerful enough for the teacher to know. तो ये एक एग्जांपल है एलो बेस्ड MLP का, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ लिस्ट, हम एक लिस्ट बनाई है जो ऑलरेडी दीक्षा में ये कोर्सेस अवेलेबल है। एंड एज यू नो, दीक्षा के सारे कोर्सेज बिकॉज ऑफ द क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस इट इज ओपन टू एनीवन। तो एक 250 से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल दीक्षा में, अलग अलग लैंग्वेज में, मराठी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, मल्टीपल लैंग्वेजेस। इफ एनी डायट फील्स कि ये कोर्स मेरे लिए काम का है, it is in my language of my state preference, you can literally go to this link, copy the course, add your metadata, launch it. Okay, वो भी आपके पास सुविधा रहेगी। and so this will be shared in the Google Drive, so आपको इसका पूरा एक्सेस मिल जाएगा 250 कोर्सेज के इस रिपोजिटरी का, right? So I'm going back. So this is what are the possible programs that diet can take up and launch. आउट ऑफ इट जैसे मैंने कहा उसमें से 3 है जहां पर एफर्टलेस लॉन्च हो सकता है, बिकॉज आप नए हो और आपको क्रिएशन का एफर्ट ना लगते हुए यू शुड बी एबल टू लॉन्च अ प्रोग्राम स्विफ्टली, राइट? तो ये एक MIP यहाँ पर है। इवन प्रैक्टिस सेशंस कैन बी इजीली मेड, नॉट ग्रेट एफर्ट। MLP इज अगेन रेडीली अवेलेबल। MIP ऑल्सो आप ट्राई कर सकते हो। दिस शॉर्ट कोर्स ऑन हार्ड स्पॉट्स यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी, और वो जो परिमाप और क्षेत्रफल, even you can try. So I'm going ahead. So now in the last section, let us quickly check that how a program can be planned and implemented. ठीक है? और वो similar approach we can take for other programs. So very quickly I'm taking you through one program जिसको हमने अभी देखा, MLP Micro Learning Package for Students. अगर ये एक प्रोग्राम हमको समझना है कि मुझे एज अ डायट कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो लेट अस क्विकली टेक अ लुक। तो MLP का एक जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑन दिस स्लाइड कि ये आपका फिजिकल टेक्स्ट बुक है जिसका डिजिटल वर्जन ऑलरेडी दीक्षा में है इन डिफरेंट इन डिजिटल फॉर्म, और उसमें अलग अलग चैप्टर्स है एज यू आर अवेयर। लेकिन अगर मैं एक डायट हूँ और मुझे पता है कि मेरा 6वीं का साइंस का एक कॉन्सेप्ट वीक है और उसके ऊपर मुझे स्टूडेंट्स के रेमेडिएशन के लिए एक छोटा MLP बनाना है, कोर्स देना है, तो मैं उस चैप्टर, फॉर एग्जांपल इस स्लाइड में जो दिखा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इस चैप्टर को मैंने लिया, उसमें मैंने चेक किया कि कंटेंट क्या है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन कंटेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, PDF है, उस चैप्टर को मैंने कोर्स में कन्वर्ट कर दिया। सो इट बिकम्स अ स्मॉल माइक्रो लर्निंग पैकेज फॉर माय स्टूडेंट्स। मैं पूरा साइंस का 15 या 20 चैप्टर्स स्टडी करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, but I'm just giving that 1 or 2 or 3 selected chapters. Kyun? Because these are those chapters which are covering those LOs which are weak for me as a district or generally for our state as a whole. Okay, let me go ahead. So approach kya hai? What is the approach for this MLP program, student MLP? तो गोल एग्जाम्पल कैन बी रेमेडिएशन, जो अभी हमने देखा, या तो सप्लीमेंटल लर्निंग मुझे देना है। दूसरा मैं क्या करूंगा, आई विल सिलेक्ट सम बॉटम LOs, ठीक है। तो बॉटम परफॉर्मिंग लर्निंग आउटकम्स मुझे कहां से मिलेंगे, या तो NAS का रिपोर्ट है, या तो मैंने स्टेट का TNA किया था, ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस, या तो हार्ड स्पॉट्स जो ट्रेडिशनली मुझे पता है कि ये वीक ही रहते हैं, ये कठिन रहते हैं हमेशा। सो दैट इज द बेसिस। बेस्ड ऑन दैट आई सिलेक्ट द ग्रेड एंड द सब्जेक्ट, कि मुझे मेरे जो वीक LOs है वो अलग अलग ग्रेड्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो उसमें से मेरे लिए लेट से सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है अभी, तो मैंने 8वीं के ले लिया, 8वीं के 5 बॉटम LOs ले लिया, या 5 ज्यादा तो मैंने पहले 2 ले लिए, क्योंकि अभी मुझे जैन में लेट से रोल आउट करना है। So that I finalize. After that, ये जो स्टेप नंबर 4, आपको सिलेक्ट करना है और सेपरेट करना है, राइट? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट कंटेंट ऑन दीक्षा व्हिच इज स्टेट टेक्स्ट बुक्स, ये आपको करना है। आफ्टर दैट, यस, आपको एक क्रिएशन का एफर्ट है, यू हैव टू क्रिएट द MLP यूजिंग योर
कंटेंट क्रिएटर राइट्स, जो हमने राइट्स की कुछ देर पहले बात की, तो आप वो MLP क्रिएट करोगे, कोर्स बनता है उसका, उसका बैच बनता है, एंड एज पर शेड्यूल यू विल रिलीज दैट, जो भी है 1 2 3 4 आपके जो MLPs है। तो उसमें जस्ट अ क्विक इनपुट टू ऑल ऑफ यू हियर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है सबको जानने के लिए, क्योंकि आप नए नए दीक्षा को अभी जानोगे, या तो आप उस पे इम्प्लीमेंटेशन हेल्प सेंटर जो दीक्षा में ही है। तो जब आप दीक्षा पोर्टल पे जाते हो, diksha.gov.in, उसमें आप एक्सप्लोर बटन पे जाते हो, एंड जब आप लॉगिन बटन पे जाते हो तो ये है, एक मिनट, लेट मी बरी मैं लेजर पॉइंटर। तो जब उस लॉगिन बटन पे जाते हो तो उसमें ये हेल्प का एक टैब है। जैसे आप हेल्प पे क्लिक करते हो, आप एक नई स्क्रीन पे जाते हो, उसके नीचे वंस यू स्क्रॉल, ये गो टू हेल्प सेंटर आपको मिलता है। ये मैं क्यों कैटेगोरिकली हाईलाइट कर रहा हूँ, बिकॉज उसमें एज यू कैन सी ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन, सारे जो कैपेबिलिटीज है दीक्षा में, कैपेबिलिटीज आई एम यूजिंग द वर्ड, उसका यूजर मैनुअल कहिए या तो ट्रेनिंग मैनुअल उसमें दिया गया है। सो अगर मुझे कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए, एग्जांपल, या मुझे MIP माइक्रो लर्निंग इंप्रूवमेंट के बारे में जानकारी चाहिए, प्रोजेक्ट्स, तो आई जस्ट क्लिक देयर। इस एग्जांपल में देखा, मैंने कोर्सेज पे गया, कोर्स मटेरियल क्रिएशन में मुझे क्या मिलेगा, तो हाउ टू क्रिएट रिसोर्स, हाउ टू अपलोड कंटेंट, हाउ टू रिव्यू एंड पब्लिश कोर्स मटेरियल, हाउ टू क्रिएट कोर्स असेसमेंट, हाउ टू पब्लिश दैट, ये सब कुछ है। ऐसे अलग अलग टैब्स है, क्रिएशन का टैब है, बैच कैसे क्रिएट करना है, सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, डिस्कशन फोरम के अगर मुझे चाहिए कैसे लाना है, सब कुछ है। तो आई सिंसियरली अपील टू ऑल ऑफ यू टू एक्सप्लोर हेल्प सेंटर, बिकॉज इट विल एम्पावर यू टू डिजाइन प्रोग्राम्स विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीवन, और आपका उसमें आउटपुट फास्ट आ जाएगा। सो जस्ट वांटेड टू कैटेगोरिकली कॉल आउट दिस, हेल्प सेंटर को बिल्कुल यूज कीजिए। आई एम गोइंग बैक। सो ये है अप्रोच, MLP फॉर स्टूडेंट का अप्रोच, ऐसे इट कैन बी डन। नाउ नेक्स्ट स्लाइड विल गिव यू एन आइडिया एग्जैक्टली ऑन अ स्केल ऑफ डेज और टाइमलाइन, वो कैसे हो सकता है, लिटिल फाइनर डिटेल्स ऑफ दैट। तो एज यू कैन सी, ये स्लाइड में हमने ये बताने की कोशिश की है कि हाउ इन अ स्पैन ऑफ फ्लैट 6 days, हाउ कैन अ माइक्रो लर्निंग पैकेज प्रोग्राम be launched by any diet, any district. Okay, so I'm just taking 2 minutes on the slide for you to understand. Day 1 में क्या होगा, तो अभी जो हमने देखा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंटेंट और दीक्षा परटेनिंग टू लो परफॉर्मिंग एलोस, तो आपने फाइनलाइज किया गोल, जो हमने पीछे बात किया कि मुझे 6वीं के बच्चों के लिए करना है, 8वीं के लिए करना है, मैथमेटिक्स के लिए करना है, साइंस के लिए करना है। तो आपने आइडेंटिफिकेशन करने के बाद you will go to Diksha and you will identify the content available. Day 2, actually this is not even day 1, this all both things can be done in one day, but still we have shown as day 1, day 2. So day 2, what you do is micro learning package, your course, then you create that course, okay, using your creator rights and using the creation approach. ठीक है, तो आपने creation कर दिया उस कोर्स का, फाइन, तो उसमें आपने बैच भी बना ली, सब कुछ आपने कर दिया। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मे बी, आप मेरे को फ्रैंकली पूछोगे, कोर्स बनाना और उसका बैच बनाना इज अ क्वेश्चन ऑफ नॉट मोर देन 1 hour ऑन द हायर साइड। काफी सिंपल चीज है, यू विल गेट टू सी वंस यू गो थ्रू द हेल्प सेंटर, और हमने SOP में भी वो डाला है। डे 3 में आते, सो डे 3 डे 4 में कैटेगोरिकली इधर हाईलाइट के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्री स्टेप्स, प्री लॉन्च स्टेप्स, लॉन्च के पहले की 2 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज डे 3 में आपको ये करना है कि मैं डाइट हूँ, तो मैं अपने DO ऑफिस से कोऑर्डिनेट करके I am conducting one quick 30 minutes 45 minutes virtual session with all my block education officers, BRCs, CRCs, principals, teachers, because जब ये launch होगा मेरे जिले में, so it is the last mile teacher who is going to take that I can say initiative to implementation, because इसमें अगर student is the end user who has to take that course or MLP micro learning package, so who is going to influence that? Teacher is going to influence. But for teachers to be aware, administratively, because teacher comes under principal and then cluster block and they report to DO's office, therefore we are encouraging that kind of a cohesive approach.
सो डे 3 में आपको ये करना बहुत जरूरी है. आई एम reiterating. इस वर्चुअल ओरिएंटेशन में ट्रेनिंग में इवन यू आर गोइंग टू हाईलाइट द फैक्ट कि कल को कुछ टेक्निकली एक कोर्स के लिए कुछ क्वेरी आती है, सवाल आते हैं, प्रोसेस के सवाल आते हैं कि मेरा कोर्स कितने दिन तक रहेगा, मुझे क्या करना है, एक्स वाई जेड. तो सवालों के जवाब देने के लिए भी योर ब्लॉक और क्लस्टर्स और टीचर्स शुड बी इक्विप्ड. सो काइंड ऑफ वर्चुअल सपोर्ट मीडियम ओके बिलो द डीए's ऑफिस. डे 4 और डे 5 में क्या दिखाया आप देख सकते हैं. बिकॉज इसमें बेनिफिशियरी इट्स एन MLP फॉर स्टूडेंट्स. तो बेनिफिशियरी, सॉरी आई शुडंट यूज द वर्ड बेनिफिशियरी, एंड यूजर इज अ स्टूडेंट. टीचर MLP में टीचर रहेगा एज द एंड यूजर. तो इस केस में टीचर हो या स्टूडेंट हो, एक वन टाइम एफर्ट ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन on Diksha is needed. Why? Because what they are going to access is a micro learning package which is nothing but a small course. And कोई भी कोर्स को एनरोल करने के लिए मुझे अपना यूजर नेम पासवर्ड एक बार डालना पड़ता है, जिसके लिए मुझे एक बार क्रिएट करना पड़ता है, वन टाइम ओनली. काफी टीचर्स का स्टूडेंट्स का ऑलरेडी क्रिएटेड रहेगा, बट यू हैव टू इंश्योर दैट इट इज डन. इसके लिए 2 दिन आपको रखने जरूरी है, सो दैट यू आर एबल टू डू दैट क्विक आउटरीच कम्युनिकेशन कि आपके टीचर्स और क्लस्टर्स को पता है. दिस इज वन एफर्ट. सो वेरी क्विकली मैं नीचे एक स्लाइड पे आपको दिखा रहा हूँ. सो दिस इज व्हाट योर स्टूडेंट्स शुड नो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रजिस्टर हियर. इधर जाके मैं अपना नाम और ईयर डाल के आई हैव टू जस्ट फिल मोबाइल नंबर एंड क्रिएट अ पासवर्ड. मेरा यूजर क्रिएट हो गया. या तो अगर मेरे पास जीमेल आईडी है तो मेरा जीमेल आईडी और जीमेल का पासवर्ड मेरा यूजर नेम आईडी बन जाता है दीक्षा के लिए, राइट. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू हाईलाइट हियर थ्रू अ नाइस स्ट्रक्चर्ड फोकस्ड आउटरीच. तो उसके लिए लिंक भेजनी हो या तो छोटा कोई आपको स्क्रीन शेयरिंग वीडियो भेजना तो आप कर सकते हो. ये आप लोगों ने ऑलरेडी निष्ठा के टाइम किया रहेगा फॉर टीचर्स. आपके पास ये सारा मटेरियल रेडी है, only you have to now use it effectively and give it to your districts. Day 6 में लॉन्च, बिकॉज ये आपने सब कर दिया. अभी आपकी सारी आई कैन से डिस्ट्रिक्ट की टीम टीचर्स रेडी है. उस दिन आपको लॉन्च, लेट्स से डे 6 इज लॉन्च. तो ऑफिशियल रोल आउट ऑफ MLP टू बी डन फिजिकली और वर्चुअली. अगेन दैट इज योर प्रेरोगेटिव. वो आपका क्या बोलते हैं डिसीजन है, वर्चुअली करना है जूम कॉल पे या फिजिकली करना है. फिजिकली में मैं डाइट प्रिंसिपल हूँ, मैं DO हूँ, तो और लेट से एज रत्नागिरी डेड कलेक्टर नहीं किया था तो वो वहां पर बैठे हैं, बट अदर एंटायर डिस्ट्रिक्ट हैज लॉग्ड इन वर्चुअली. अगेन दैट्स योर कॉल. तो ऑफिशियल रोल आउट टू बी डन वर्चुअली या फिजिकली. डे 7 से क्या होगा? डे 7 से आपको आउटरीच करनी, आउटरीच एंड कम्युनिकेशन टू बी डन टू एंश्योर कोर्स अडॉप्शन. आपका MLP या कोर्स या जो भी आप रोल आउट कर रहे हो वो कितना भी पावरफुल, अच्छा, अट्रैक्टिव, यूजफुल क्यों ना हो, जब तक एंड यूजर को पता नहीं कि मुझे करना है, ये टाइमलाइन है, ये मुझे बेनिफिट है, उसका अपटेक एंड अडॉप्शन नहीं होता है. एंड दैट इज वेयर कम्युनिकेशन आउटरीच बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल. निष्ठा ने हमने सिखाया है, निष्ठा 1.0, 2.0, 3.0, ऑल ऑफ देम, कि आउटरीच इज द की टू अडॉप्शन, राइट. तो आपको डे 7 से छोटा छोटा आउटरीच करना यूजिंग व्हाट्सएप, राइट, और मे बी वर्चुअल कनेक्ट्स. एंड डे 8 से आपको जो रिपोर्ट व्यूअर का एक्सेस मिलेगा या मिला है, या कोर्स मेंटर ये जो आपको रोल मिला है, उसको लेकर यू विल बी एबल टू ट्रैक कि मेरे जिले में साइंस के लेट से 15,000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चे. सो आई एम एबल टू ट्रैक, क्योंकि 10,000 में से अच्छा 4,000 ने एनरोल किया. सो दैट मीन्स मुझे और थोड़ा आउटरीच करना है कि रेस्ट आई हैव टू एनरोल. ओके, सो दिस इज द रोल आउट प्लान for student MLP program, and similarly there can be plans done for other programs also. This is just one example I am reiterating. So let us move ahead. तो अभी associated next step क्या है? अपने को program roll out करना है. We have to do this now in the next 2 weeks. So I am a district. What should I do now? So इसके बावजूद what I have to also do is I have to engage the local ecosystem. I think that is what Arvind also called out categorically. एंगेजिंग द लोकल इकोसिस्टम का मतलब है जो भी NGOs और लोकल पार्टनर्स काम कर रहे हैं मेरे जिले में, आई शुड इन्वॉल्व देम, इनवाइट देम टू बी पार्ट ऑफ द
process, all that can come to actually your help. So what can be the support that you can seek from them? Example, program designing में उनका help हो सकता है. इसका मतलब क्या है कि already NGOs भी काफी अलग-अलग programs करते हैं, अलग-अलग राज्यों में करते हैं, districts में करते हैं, and there are success stories. तो अगर आपके NGO ने कोई program किसी दूसरे राज्य में या district में किया था, then that can be replicated in your district also because they have the experience around it. That can be utilized. Second is program implementation. Again, ensuring effective outreach and communication so that there is maximum uptake and adoption. Usme bilkul your local partner can be of great help. And last but certainly not the least, content creation may also in that also they can be of great help because one, they have the skills to do that, they have the knowledge, they have the inclination, so they can create something. Of course, you are the ones, you are the academic experts, subject experts. You can review that and approve that you are sure it is in the academic framework, or they can do some curation with existing content, or even translation. जैसे कुछ देर पहले मैंने दिखाया था, there is a list of 250 plus courses available, but they are only, let us say, English, Hindi, Marathi, let us say Oriya, Telugu, but you want something in Assamese, you want something in, let us say, Gurumukhi, some different languages. So maybe translation effort can be done by that NGO, right? Because मुझे local language में content चाहिए. So that is the next step. Engage the local ecosystem, identify the partners, and partner with them and take them along in this journey, right? Last 2 slides left. So how can diets contribute to the state performance? So as you can see, जब diets अलग-अलग इसमें काम करेंगे तो ultimately उसका impact state में जबरदस्त आएगा. So you will be helping in implementing Ministry of Education MOE programs. Example, Vidya Amrit आप कर रहे हो, Nipun Bharat है, multiple programs. You can also help in implementing Government of India recommendations. Like the June 2022 letter issued by Ministry of Education had a categoric mention of post-NAS interventions to be done. So MLP for students on weak LOs based on NAS is exactly that, post-NAS intervention. You can add new content to the state repository. Us फायदा सबको होगा, right? You can identify good quality existing content from the courses available from state board or other boards. You can rule out creative and customized programs. इसका फायदा दूसरे जिले को भी होगा, state को भी होगा. You can build capacity of your Anganwadi workers or FLN or administrators or parents or different personas. Lastly, you can help in increasing the consumption, because ultimately there has been a lot of effort in the last 3-4 years on developing content which we call as supply. But अभी इतना अच्छा content है, अच्छे programs है, उसका uptake होना है, adoption होना है, access होना है. तो consumption numbers of energized textbooks हो, निष्ठा हो, courses हो, MLPs हो, projects हो, उसका consumption बढ़ेगा. So last is, this is what we call as district collaboration model, district collab model, जो मैंने कुछ देर पहले हाईलाइट किया था कि डाइट्स को अभी ये 6 रोल मिल गए, ठीक है. ये रोल से कोर्स क्रिएशन के लिए मतलब MLP के लिए, ये रोल से प्रोजेक्ट के लिए मतलब माइक्रो इंप्रूवमेंट प्रोग्राम या इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, तो ये 6 रोल मिल गए. बट डाइट अनलेस दे वर्क इन टैंडम विद द DO's office, EO primary, EO secondary, who actually have the administrative, I can say, authority to mandate certain program for implementation till the last level. Unless this happens, the program may get designed nicely, but maybe implementation and uptake can be an issue. So therefore, any program has to be done in collaboration with the DO's office. And there is, I think, one designation or role which is additional DO, which takes care of academic. So I think if you're able to involve that position categorically, then it will only augment the entire program and the approach and implementation, right? So that was from my end, Arvind. We can then next move to. Thank you, Rakesh. Thank you, Rakesh. I saw a lot of requirements coming from districts in the chat box, talking about and highlighting about face-to-face meetings and this kind of session. And I also see a requirement coming for this presentation. So I have requested my colleague Vanita. She would be putting though we have already shared a drive link in the letter that has gone from NCERT
3 days back to all states, UTs, and districts with the links. So I have also, we are again putting the same link, drive link in this chat box also, wherein you would find all the relevant documents over there. And thank you, Rakesh. You nicely explained that how districts can take advantage and leverage Diksha infrastructure and run the local programs. So it was very, very useful. Thank you. Thank you so much for that. With that, I would quickly request Ratnagiri districts to share their experience, their best practices, and how they have done it. And in the interest of time, I would also request them to, complete their presentation in 5 to 6 minutes, please. Thank you. Shivalkar, sir. Sushil Shivalkar, sir, is the principal of Diet. So in case Sushil, sir, you are connected, you can quickly start, and then Snehal madam will take it ahead. अच्छा, शिवलकर सर को अनम्यूट करना है. विनीता, can you help please? Okay, thank you, sir. मेरी आवाज आ रही है सर? Yes, please go ahead. Okay, thank you. सभी को नमस्कार. मैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से डाइट प्रिंसिपल सुशील शिवलकर आपके साथ मेरा अनुभव साझा कर रहा हूं. रत्नागिरी जिले में आदरणीय जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह साहब, आदरणीय जिला परिषद सीईओ कीर्ति किरण पुजार साहब, इन्होंने नेशनल अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो लर्निंग पैकेज एवं रत्न संकल्प कार्यक्रम शुरू किया है. इसमें एसीआरटी के सम्मानित निदेशक का लाभ भी हमें प्राप्त हुआ है. उसी के साथ दीक्षा पोर्टल के स्टेट कोऑर्डिनेटर आदरणीय राकेश जी ठकार जी ने भी इस माइक्रो लर्निंग पैकेज की तैयारी और आगे के परामर्श में अपना भूमि जिले के माननीय जिलाधिकारी, दीक्षा पोर्टल के स्टेट कोऑर्डिनेटर राकेश जी ठकार साहब तथा डाइट के समस्त अधिकारियों ने इस माइक्रो लर्निंग पैकेज के निर्माण के बारे में विस्तृत चर्चा की. इस कार्यक्रम के शुभारंभ को लेकर भूमिका ली. नेशनल अचीवमेंट सर्वे में रत्नागिरी जिले की शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र में तीसरी और 5वीं कक्षा में दूसरे स्थान पर है, लेकिन अधिक प्रयास आवश्यकता है. इसलिए सबसे पहले 8वीं कक्षा को चुना गया. उसमें से भी गणित विषय का चुनाव सबसे पहले किया गया. 8वीं कक्षा के गणित विषय पर अध्ययन निष्पत्ति के आधार पर रत्न संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. माननीय जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह साहब द्वारा सभी तकनीकी पहलुओं के संदर्भ में परामर्श किया गया. इस माइक्रो लर्निंग पैकेज की प्रमुख विशेषताओं को देखते हुए मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा. 9वीं कक्षा के जो छात्र 8वीं कक्षा की गणित अध्ययन निष्पत्ति के निम्न स्तर पर थे, उनके लिए ये कोर्स है. यह कोर्स दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है. इस कोर्स में 8वीं कक्षा की गणित अध्ययन निष्पत्ति के आधार पर छोटे छोटे वीडियोज है. ये वीडियो देखने के बाद छात्रों का मूल्यांकन मनोरंजक तरीके से किया जाता है. जो छात्र कोर्स को पूरा करते हैं उन्हें तत्काल ई सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है. 10 से 20 मिनट तक का ये कोर्स, इस तरह 5 कोर्स उपलब्ध है. छात्र अपने समय और गति के अनुसार कभी भी और कहीं भी इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं. 9वीं कक्षा के 4500 छात्रों ने अब तक कार्यक्रम का लाभ उठाया है. हर पाक्षिक में एक नया कोर्स 8वीं कक्षा की गणित अध्ययन निष्पत्ति के आधार पर छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है. पहले कोर्स के लिए पंजीकरण कम था, पर जिस तरह डाइट के अधिकारियों ने इसका प्रचार और प्रसार किया, उससे स्कूल हेड, स्कूल अध्यापक एवं अभिभावक पूरी लगन से इसमें शामिल हुए.
फिर इन सब ने छात्रों को कोर्स में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। कोर्स के बारे में जब जिले के कुछ स्कूल हेड टीचर और गणित अध्यापकों से बातचीत की तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि छात्र नए कोर्स के लिए उत्सुक होते हैं और कोर्स के बारे में अपने सहाध्यायी से भी विचार विमर्श करते हैं। यही इस कार्यक्रम की सफलता का प्रमाण है। मुझे लगता है कि इस माइक्रो लर्निंग पैकेज की सफलता यह है कि शिक्षक भी ये पूछते रहते हैं कि पहला कोर्स पूरा होने के बाद अगला कोर्स कब शुरू किया जाएगा। शिक्षकों के साथ साथ माता पिता भी ये देखने के लिए उत्सुक है कि उनके छात्र क्या कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में माता पिता ही थे जिन्होंने छात्रों को मोबाइल फोन देने से मना कर दिया था, लेकिन जब उन्हें इसकी उपयुक्तता पता चली तब उन्होंने मोबाइल देना शुरू किया। मोबाइल फोन छात्रों को आसानी से मिलना भी इस कार्यक्रम की सफलता का प्रमाण है। इस रत्न संकल्प एमएल की कार्यक्रम की सफलता और कार्यान्वयन में योगदान देने वाले सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। अभी हम इस उपलब्धि से रुके नहीं है, इसके आगे भी सभी कक्षाओं के सभी विषय पर हम और भी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के बारे में बस एक पंक्ति से अपने हेतु को प्रकट करूंगा कि मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समुंदर तलाश कर। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इसके बाद मेरी साथी अधिकारी स्नेहल मैम जो इस कार्यक्रम के तकनीकी पहलुओं को आपके सामने साझा करिए। तो थैंक यू वेरी मच। दिल्ली से जिससे जुड़े हुए सब दोस्त ही जुड़े हुए, दिल्ली से यहाँ कहाँ दिल्ली कहाँ हम सब दोस्त जुड़े हुए। Thank you, sir. Yes. बॉम्बे से Sir, am I audible? Yes, you are audible, ma'am. Okay, please start from first line, please. So we just have 3 to 4 minutes, madam, for this. So if you can cover Yes. very. Okay, sir. Okay. Namaste, all of you. Good afternoon, honorable all dignitaries from NCERT, all diets from all over India, and all of you, my friends. I am Snehal Pednekar, lecturer from Diet Ratnagiri, and I am here to discuss about the Ratna Sankalpa MLB, micro learning package for students. As per Rakesh Thakar sir said that this is the first initiative in all over India on the district level. So it's a very good opportunity, golden opportunity for us. So I am going to discuss with you in 3 steps, that is pre-planning, launching period, and post-launching of this project. Okay, so first of all, before pre-launching preparation, we selected the right chapters as per the LOs. Before that, on 2nd November, there were one meeting with our honorable district collector, MD Singh sir, Rakesh Thakar sir, and our ex-principal, Dr. Gajanan Patil sir, about this course, about the National Achievement Survey 2021 report card. And as per that report card, we selected 8 standards math subject. And from that math subject, we selected that alone where our students were very low or they were on the below level. So we selected 9 standard students for this course. Why? Because that students were at the time of National Achievement Survey, they were in 8th standard. So that right now the 9 standard students are selected for this course. Then we create first of all test batch for 2 days. And that was very successfully we have run. Then a final batch with 15 days timeline. We have given them e-certificate also. We created this e-certificate with the sign of our principal, diet principal. Then pre-launching preparation. For that preparation, our ex-principal, Dr. Gajanan Patil sir, made one video which will going to create awareness about this project in the teachers from secondary schools and HM and also parents and eventually our parents. Then official communications we have done with our all BOs, block education officer about it. Then orientation sessions with all teachers. It means especially with the maths teachers, all CRCs and all BOs. Also press coverage also spread all over the district, all over the state. Then we made some planning for outreach communication. We spread WhatsApp messages towards all over district, and also we communicate with all the participants or all the related persons
like parents also, like students also, teachers also, and HMs also. Then launch details. On 24th November 2022, this project Ratna Sankalpa MLP. I want to share with you that why the Ratna Sankalpa, because this is the Sankalpa taken by Ratnagiri district, so that it's a Ratna Sankalpa, and it was launched by the hands of the district collector, Honorable MD Sinha sir, in the presence of SCRT director, SCRT deputy director, and IT HOD, then Jilha Parishad CEO, then our principal, all BEOs, all CRC members, and all principals and teachers from all over district. And it was very tremendous launching day. Then after that, a real journey of the Ratna Sankalpa MLP started. Batch first was started from 24th November, and our target audience in 9th standard students, Marathi medium. Yes, first of all, we are trying to do this kind of course for Marathi medium, but from Urdu medium and English medium also, they are asking that when we will the part of this project. Okay, so this is our success, friends. Target volume, our in front of us, there are 8,000 students of 9 standards, and out of 8,000 students, for the first course, 3,504 enrollments are there, and then 2,820 completions. 97% students, 97% students e-certificate. I am talking about the Ratnagiri district students, but we have support from other than all district students also. Here we can see the figures. 270 students got certificate of this course. So this is a success. I want to share with you what is the reason behind this success, because Ratnagiri is known for teamwork culture. So we all are doing this kind of teamwork through all over the district, and so that Ratnagiri is always on the topmost position in every survey, every exam, whatever. And in this journey, we got support from our collector also, our CEO also. But eventually, most important persons are our teacher, parents, and students, and HMs, friends, and also SCRT IT department head Vikas Garad sir also, and Yogesh Sonone sir. Then their all team very much gave us support for success of this project. And one of the point of this course, that is, I would like to call on this online dais our one HM, which is the representative of our district's HM, that is Rohit Jadhav sir, to express his reflection about Ratna Sankalpa MLP within 1 minute. Please, sir, unmute him. And thank you all the dignitaries to give me such kind of chance. Thank you, all of you. So the name is Rohit Jadhav. Thank you. Thank you, ma'am. And thank you, Ratnagiri district. It was overwhelming and it was fabulous presentation. In the interest of time, I think we need to move ahead. And that was one of the best example which you portrayed and which you shared. And imagine wherein we have 26 crore students and 90 lakhs and more than 90 lakhs teachers. How would that be possible if we do not have the entire ecosystem moving hand in hand and together? And how is that be possible if we don't leverage the entire Diksha infrastructure with the support of entire ecosystem and with the bottom-up approach, so that the entire objective or the main objective or the main essence of NEP 2020 can be achieved. So with that, I would also request Megha, my colleague. She would be talking about Vidya Amrit Mahotsav. We all know that micro improvement is another capability of Diksha infrastructure, which can be combined together with a lot of programs and projects which is being run on Diksha, leveraging Diksha infrastructure today. For example, Vidya Amrit Mahotsav is one example, wherein we have seen overwhelming response coming from the entire country, and the recognition entries under this program, teachers were being recognized for their innovation, which is happening in every school or in the schools in the entire country. And the last date for submission of those innovations was already over by 10th of January. And we already had 4 workshops with respect to that.
in the month of December that how do we evaluate. So this evaluation process is also happening. It's like a bottom-up approach, starting from district and then going on to state level and then going on to up to the national level and the central level. So in the next few minutes, we will quickly talk about this evaluation process and the dates what we have. And with this, I request Megha to quickly cover that part here. Thank you. Thank you, Arvindji. Thank you, Rakesh and Ratnagiri, for such a beautiful presentation. Am I audible? Yes, Megha, you are audible. All right, thank you. So, as Arvindji also mentioned, the last date for Vidya Amrit Mahotsav was 10th of January. We have received a lot of projects from the states, from all of you districts. So the evaluation guideline package was shared on 29th of December with all the states and UTs. And I would request for all of the dyads to get access to it, go through that package, and it has 5 things in that package. The package has overview of the evaluation process, evaluation guideline, user guide, presentations that can be used by dyads and states, and meeting links of workshops that Arvindji mentioned, 4 workshops that were conducted in the month of December. So please, get access to that entire package. If you have any challenge in accessing that package, you can reach out to your states or UTs, or you can connect with us virtually on Tuesday and Thursday, 4 to 5 p.m. on Zoom link. That all of the states and UTs will have access to that Zoom link. You can get in touch with the states. All the state coordinator, Diksha coordinators will have access to this. All of those who are on the WhatsApp group. So you can reach out to your states for getting access to that link, and please try and understand that evaluation process. And if you have any challenge, please connect with us virtually or with your states. I would request all the Diksha state coordinators to share the link with the dyads as well, in case they have any challenge or they reach out to you guys. So now we will go ahead with the brief of evaluation process. Now that all the states have received their Vidya Amrit Mahotsav projects on Diksha app, तो अब जब स्टेट्स के पास खूब सारे प्रोजेक्ट्स आ गए विद्या अमृत महोत्सव के, टीचर्स और टीचर एजुकेटर्स और स्कूल लीडर्स ने सबमिट कर दिए हैं, अब उन प्रोजेक्ट्स का क्या करना है? सो अब उन प्रोजेक्ट्स को दीक्षा ऐप पे स्टेट लेवल, एक स्टेट में वो SCRTs अपने लेवल पे एक ज्यूरी बनाएंगे और डिस्ट्रिक्ट भी अपने लेवल पे एक ज्यूरी बनाएंगे. सो जो स्टेट लेवल की जो ज्यूरी होगी, जिसमें 4 से 5 लोग होंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक ज्यूरी होगी जिसमें 4 से 5 लोग होंगे, तो स्टेट लेवल ज्यूरी जो है दीक्षा ऐप से या दीक्षा पोर्टल से डाउनलोड करेगी डिस्ट्रिक्ट वाइज फिल्टर्ड टास्क रिपोर्ट, और वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स को वो रिपोर्ट देगी. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ स्टेट एक्स विच हैज अ डिस्ट्रिक्ट ए, तो स्टेट एक्स वो डाउनलोड करेगी रिपोर्ट और उसमें फिल्टर लगाएगी ए डिस्ट्रिक्ट का, और वो ए डिस्ट्रिक्ट को वो शीट देंगी. सो ऐसे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगी तो वो सब डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी फिल्टर्ड रिपोर्ट मिलेगी और एक गूगल फॉर्म मिलेगा स्टेट से. सो वो जब शीट मिल जाएगी आपको और गूगल फॉर्म मिल जाएगा, तो आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल ज्यूरी जो है, लेट्स से यू हैव नाउ 10,000 और 5,000 और 100 प्रोजेक्ट्स टू इवैल्यूएट. अब आपको क्या करना है कि आप अपनी ज्यूरी में जो कि 4 से 5 लोग होंगे, उनमें आपस में डिवाइड कर दीजिए कि वो कैसे आप इतने प्रोजेक्ट्स को कैसे इवैल्यूएट करेंगे. Now that once that division is done, now you will score these projects using a district level rubric. This rubric is shared in the evaluation package, and in this entire process that I'm telling you in brief is shared in the package. Please go through that package to understand what exactly that rubric is and how you have to score these projects. आपको वो projects में videos देखना है जो teachers ने भेजे हैं, और project की क्या क्या details देखनी है वो भी एक mention है पूरा package में. So once you go through that rubric, आपने उस rubric के basis पे हर एक project को आप score करेंगे, तो आपको identify करना है top 1, 2 or 3 projects. Now this is also defined in the this is recommended in the package itself कि अगर जो states बड़े हैं वो हर एक district अपने top 1 या 2 projects दे सकते हैं, जो कि जो states छोटे हैं
उस जिनमें कम डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अपने टॉप 5 या 7 यूटीज इवन टॉप 25 दे रहे हैं. सो दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्टेट. So once you identify top projects from the district level, you have to share them in a Google form to the state level jury. Now the state level jury collates all the information that they receive from the district. Let's say आपके state में 10 district हैं और हर district ने अपने 3 top projects select किए हैं, तो हर state जो है हर district के 3 projects को यानी कि 30 projects को एक Excel sheet पे collate करेगी. Now once all those projects have been shared with you, now the state level jury will also score these projects on a state level rubric. This rubric is shared in the evaluation guideline in that package. Please go through that rubric, and in case you have any challenge, please connect on the open office call on Tuesday or Thursday. Once state level jury scores these projects, you have to identify on the top जो भी आपको projects मिले हैं district से, उसमें से identify करना है आपको top 15 projects. तो इस पूरे task के लिए timelines defined है. States को 2 दिन के अंदर अंदर Excel download करके distribute करके और Google form देना है district को. District को अपने सारे projects 10 से 12 दिन में identify करना है top 1 या 2 या 3 projects या 10 projects और state को देने हैं. Now state has to evaluate using a rubric and share top 15 projects. Identify top 15 projects. ये state को 7 दिन में करना है. Next slide please. Thank you. एक बार जब स्टेट लेवल जूरी आइडेंटिफाई कर लेगी कि टॉप 15 प्रोजेक्ट्स क्या हैं, तो उनको वो टॉप 15 जो टीचर्स या टीचर एजुकेटर्स या स्कूल लीडर्स हैं उनको कम्युनिकेट करना है कि आप सिलेक्ट हो गए हो टॉप 15 के लिए. आप उनको रिकॉग्नाइज करना चाहते हो तो रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कैन द को-होस्ट प्लीज हेल्प मी हियर. Please mute the audio. Anil Srivastav ji, thank you. So once आप identify कर लो कि कौन top 15 teachers हैं, उसके बाद आप उनकी WAM उनके videos जो है task report से download कर सकते हैं और इन videos को collection बना के आपको दीक्षा project में submit करना है. दीक्षा में एक collection बना के आपको दीक्षा पे पब्लिश करना है. सो इस पूरे काम के लिए आपके पास कुछ दिन दिए गए हैं. आफ्टर यू आइडेंटिफाई दीज टॉप 15 एंड यू पब्लिश देम ऑन दीक्षा, आपको इसका इन 15 वीडियोस का आउटरीच करना है. ये आउटरीच 3 से 4 हफ्तों तक आपको करना है. इसमें आप वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स पे यानी कि व्हाट्सएप पे या फिर आप यूट्यूब पे या फिर आप दीक्षा का लिंक दे सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन वेरियस चैनल्स पे, फेसबुक, आप इनका आउटरीच कर सकते हैं. सो वंस दैट आउटरीच इज डन, आप प्लीज इंश्योर करें कि दीक्षा ऐप का ही लिंक शेयर करें, क्योंकि दीक्षा ऐप पे कितना वो कंटेंट, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या फिर वो वीडियो कितनी बार व्यू हुआ है, क्या रेटिंग हुई है, कितना यूजर रिटेन किया है उस वीडियो पे, कितनी देर तक रुका है, इन सब का कॉम्बिनेशन लेके वो इवैल्यूएट होगा. सो वापस से वो जब इवैल्यूएट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट ऑन आउटरीच रूब्रिक, ये भी शेयर्ड है इवैल्यूएशन पैकेज में, कि इन सब पैरामीटर्स पे जब वो टॉप 15 प्रोजेक्ट्स इवैल्यूएट होंगे तो उनमें से टॉप 3 कौन से हैं ये आइडेंटिफाई किया जाएगा और ये टॉप 3 आपको एनसीईआरटी को शेयर करने हैं within 2 weeks. So इस पूरे इवैल्यूएशन प्रोसेस में डिस्ट्रिक्ट्स का भी एक बहुत मेजर रोल है और स्टेट्स का भी एक बहुत मेजर रोल है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या सो ये मैंने आपको ब्रीफली बता दिया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल जूरी को, डिस्ट्रिक्ट्स को जब डिवाइड कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट्स तो वो उनको क्या क्या चीजें देखनी है. उनको एक्सेल शीट जब दी जाएगी स्टेट से तो उनको देखना है कि प्रोजेक्ट टाइटल सही है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव सही लिखा है, टास्क उन्होंने सारे कंप्लीट किए हैं कि नहीं, विद्या अमृत महोत्सव वीडियो उन्होंने अटैच किया है कि नहीं,
वीडियो की क्या क्वालिटी है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या वो मैच कर रहा है उनके टाइटल और ऑब्जेक्टिव से, टास्क से, कितना इनोवेटिव है वीडियो, कितना सिंपल है, कितना रीयूजेबल है या कितना रेलेवेंट है, ये सब कुछ उनको इन सब चीजों को पे पैरामीटर्स पे उनको जज करना है और फिर स्कोर करना है। और फिर जब वो आइडेंटिफाई कर लेंगे टॉप 1, 2 या 3, दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर स्टेट, तो वो गूगल फॉर्म में उन्हें टॉप प्रोजेक्ट्स शेयर करने हैं स्टेट को। सो ये जो जितने भी पैरामीटर्स मैंने बताई, तो बस मैंने 3-4 ऐसे ऑन द टॉप ऑफ माय माइंड जो थे वो मैंने बता दिए, बट ऑल ऑफ देम आर लिस्टेड इन इवैल्यूएशन पैकेज। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। नाउ विद्या अमृत महोत्सव का जो लास्ट डेट थी 10th of January for teachers and school leaders and teacher educators to submit their videos. Now that was 10th of January. ये जो मैंने ब्रीफली आपको बताया है वैल्यूएशन का पूरा प्रोसेस, इसके हमने 4 वर्कशॉप्स ऑलरेडी कर लिया। हम 2 और वर्कशॉप्स कर रहे हैं, रिफ्रेशर इवैल्यूएशन वर्कशॉप for 1.5 hours. These will be done on 17th and 18th. First one is in English and the second one is in Hindi. The links will be shared with you shortly in a couple of days or so, and you can join them. Now, the follow-up call for progress on selection of top 15 submissions by state. इसकी ये last date share की गई थी 29th of December को, जो मेल आपको लेटर गया है उसमें शेयर किया गया था कि 31st January तक स्टेट्स को अपने टॉप 15 आइडेंटिफाई कर लेना है। तो उससे पहले हम एक कॉल करेंगे, एक वी विल गेट टुगेदर एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेयर आर वी and who all need support, and we'll provide whatever support is needed. This meeting will be is scheduled on 27th of January, and by 31st of January you have to submit your top 15 projects. In top 15 को आपको दीक्षा पे अपलोड करना है। इसको करने के लिए 7 दिन है। 7 February is the last date, but before that on 3rd of February we will have a meeting to understand where all the states are. Next slide please. नहीं मिला तो वहाँ पे मिल जाएगा वहाँ पे। हाँ भाई वहाँ 100 वाले लो 10 रुपया तो चेंज नहीं है। Would request everyone to please be mute. You can ask your questions later after this slide. This is the last slide. Follow-up call. So after all these top 15 projects as a collection are published on Diksha, you have to conduct the outreach of these videos. Now, इस outreach के लिए 3 से 4 हफ्ते हैं. So the last date is 28th of February. Before that, 28th of February से पहले, 21st of February, we will have a call where the states are on outreach. If you provide any support, how NCERT can support you on this. So last top 3 videos select करने की 14th of March last date है. तो इससे पहले 6th of March को हम एक मीटिंग करेंगे टू आइडेंटिफाई कि सबने आउटरीच पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट किया, किसी को कोई चैलेंज तो नहीं है. सो आई होप दीज टाइमलाइंस आर सबको समझ में आ गया है. पीपल विल adhere to it and we will provide support accordingly. Next slide please. Thank you. Thank you, Megha. I think मैं एक चीज आप सबसे शेयर करना चाहूंगा. Lot of information has been shared today. ये सारी की सारी information और presentations जो है हमने ड्राइव में सेव कर दी है. We have put all the presentation and the relevant documents, SOPs in the drive, which is shared in the chat box. So you please keep that link with you. We'll keep updating that drive and all further documents in the same link. And you can always refer to these documents and these dates which you may not be able to memorize and remember, or you may not have noted down. So you will have all this readily available via that link. So that's one. And 2, we will have further workshops and orientations and communication from NCERT to all the states and districts, time and again with respect to all the events which was shared just now. So it's a time for Q&A. And if you have any question, any query, I would request you to raise your hand so that we can call out
for any information clarification if you have. I can see Shama Charanji. I could see the raised hand there. If you have any query, please unmute and please share it. Okay, anyone else, if anyone has any query, please feel free to. I could see a hand raised from Diet Khandwa. So please. नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज आपके प्रेजेंटेशन को देख करके बड़ा मन खुश हुआ और बड़ा अच्छा लगा कि बड़े सिस्टमेटिक तरीके से कार्यों को संपादन करने की आपने हमको प्रेरणा दी और आप सारे लोग बधाई के पात्र हैं सर। हमारी ओर से, हमारे स्टाफ की ओर से धन्यवाद। बस यही है कि इसके लिए जो टेक्निकल हम लोगों को और जरूरत है सपोर्ट की, और इस तरह के जो पूरा कोर्स को डेवलप करने का एक ब्लू चिप पे है ना, यहीं करते इस पर यदि हमको फेस टू फेस अगर इसकी व्यवस्थित ट्रेनिंग मिल जाएगी तो हम लोग शायद ज्यादा बेहतर ढंग से इस प्रक्रियाओं में आपको जैसा आप चाहते हैं वैसा हम कार्य को संपादित कर पाएंगे। ये हमारा स्टेट से भी रिक्वेस्ट होगा और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे को इस तरह के टेक्निकल सपोर्ट के लिए जरूर हम लोगों को आप ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्रदान कर दीजिए। शुक्रिया सर आपके फीडबैक के लिए। हम लोग जरूर इस पे विचार विमर्श करेंगे और स्टेट के साथ भी डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं पूरे देश के अंदर 750 डिस्ट्रिक्ट प्लस हैं, तो उन सबको एड्रेस करना जब तक से हम सब मिलके स्टेट के साथ, यूटीज के साथ सब लोग मिलके आगे नहीं बढ़ेंगे वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो वी विल डेफिनेटली, इट्स अ वैल्यूएबल सजेशन। हम लोग इस पे जरूर विचार करेंगे, स्टेट के साथ डिस्कशन करेंगे कि इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, और एनसीईआरटी में भी हम लोग इसके ऊपर कुछ ना कुछ तरीका जरूर निकाल के वापस आएंगे। I can see one hand raised from user DP विश्वकर्मा जी, प्लीज आप बताएं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर। डाइट सिवनी केवलारी डिस्ट्रिक्ट सिवनी से बात कर रहे हैं सर। जी जी सर। सर नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की वर्कशॉप में आपने दीक्षा पोर्टल पर जो विभिन्न प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध हैं उनके कैसे शिक्षा क्षेत्र में अधिक उपयोग कैसे सकता है इसके बारे में आपने एक विस्तृत चर्चा की। मेरा एक निवेदन था, ये व्यक्तिगत निवेदन भी हो सकता है कि हिंदी भाषी राज्यों के लिए बहुत सारी बातें जो अंग्रेजी भाषा के रूप में प्रस्तुत की गई थी, उसके लिए अगर हिंदी भाषा के रूप में भी अगर कोई प्रेजेंटेशन उपलब्ध हो पाता है तो बहुत अच्छा है, या फिर एक छोटी वर्कशॉप हो सकती है, एक शॉर्ट वर्कशॉप के रूप में हम इसको कर सकते हैं जो हिंदी भाषी राज्यों के लिए हो, ताकि अधिकतम जानकारियां और विस्तृत तौर पर सभी हिंदी भाषी राज्यों के डाइट्स के साथ और डाइट के जो एकेडमिक स्टाफ के साथ हम लोग विस्तृत तौर पर कर सकते हैं। थैंक यू सर। जरूर जरूर सर, आपका सुझाव बहुत अच्छा है और हम लोगों ने पहले भी वर्कशॉप्स इसी तरीके से की हैं, इंग्लिश में भी की हैं और हिंदी में भी की हैं। हम इस पे जरूर प्लान करेंगे और वापस इसके ऊपर आएंगे। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। I don't see any other hand now. So I think with that, I would request Professor Induji if she can share and guide us the way forward. Thank you, Mr. Arvind. I think now the things are very clear through the presentation that we have made, and we are looking forward to further collaboration for taking this endeavor forward. So, and whatever support
states and UTs require from us, we are always there. And this is not the first meeting that we are having. And in future also, we will keep such meetings for periodic updates and also getting connected to all the district level professionals so that we can work hand in hand and in close proximity to take the work forward as per the SOP, which is already shared. And it is good that Mr. Arvind has already made such arrangements that all the content, all the material presentations are available to everyone, so that whenever we feel any kind of gap in accessing and referring to the information related to this particular initiatives can be referred to by the district level authorities. So, and in case you people want any change in the SOP also, or you have certain suggestions for it, we are welcome to receive and take up those suggestions also. And the way we are carrying out the tasks related to this initiative. So we are looking forward to your suggestions as well, but keep yourself updated to all the information related to this particular task, so that you know the holistic the holistic purpose of this particular task, which will empower us all, the national level authorities as well as district and state level authorities. Because to take the system of education to another level as per NEP 2020, it is very important to work in close proximity. I think Madam ka network we have lost. I think by the time she joins back, so let me extend my gratitude and my thanks to all the participants, all the valuable participants who have joined, and they have taken out their time for this workshop. And we will surely come back and have further workshops related to this. And any suggestion, any feedback, please feel free to get back to NCRT, as Professor Induji just mentioned and stated. So thank you all. Thank you so much.